Hello dear students, and today we are going to start a very new topic that is called integration by parts, method of parts, integration by method of parts. In earlier what we will do, so whatever with the integration we will do, there is only single function. Like that we do like x square dx or sine twice x dx or something x square by x square minus 1 dx. This type of integral we have we perform such type of integral in the earlier classes. Here only this is a single function, this is a single function, this is a single function. Now if there is a two function fx and gx, fx is a function, gx is a function, what is the integration of this? What is the integration of this type of function? How to find the integration of such type of function? Like in differentiation there is a product will dx of u into b. So what is the formula? U into dx of b plus b into dx of u. Likewise in integration there is a formula if u and b are differentiable function. Differentiable function means du dx and db dx exist. Then what is the integration of u into b? दोनों का प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? पार्ट्स मीन्स वॉज पूरी इंटीग्रल को हम पार्ट कर लेंगे, ठीक है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ पार्ट्स. व्हाट इज द रूल? फर्स्ट यू स्टार्ट विथ फर्स्ट फंक्शन. सपोज यू इज द फर्स्ट फंक्शन and b is the what? Second function. Whatever it can be, b can be also first function and u can be also there is a first function. Anyone can be chosen as a first function. Here I am choosing u as a first function and b as a second function. So what is the formula? First function into integration of second function. Very important is that integration of second function means जो b function b है उसका इंटीग्रेशन रहना है, तब जाके हम लिख सकते हैं. उसका रिजल्ट जो इंटीग्रेशन करने का रिजल्ट मिलना चाहिए, तब जाके उसको सेकंड फंक्शन ले सकते हैं. बट यू मे हैव एन इंटीग्रेशन, मे नॉट हैव एन इंटीग्रेशन. उसका इंटीग्रेशन रह सकता है, नहीं भी रह सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट यू मस्ट बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. वो ये इंटीग्रल छोड़ दे कैसे हुआ? हाउ यू कैन रीड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जिसका हमने कुछ नहीं किया था उसको फिर किया डेरिवेटिव किया. डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन, उसको रिपीट किया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. वो जो रिजल्ट मिलेगी दिस रिजल्ट इज अगेन व्हाट विल डू? इंटीग्रेशन. विल डू एन इंटीग्रेशन ऑफ दैट रिजल्ट अगेन. सो हम कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एज ए होल इंटीग्रेशन. ठीक है, एज ए होल इंटीग्रेशन. तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है आप लोगों को फॉर्मूला देखने के बाद, शायद कुछ लोगों को डर भी लग सकता है कि कैसे मैं याद रखूँ. इट्स वेरी इजी. वन वी आर गोइंग टू सॉल्व 1 2 3 क्वेश्चंस, देन इट विल बी you will be very comfortable with this. So first function very important. You read like the first function into integration of second function minus डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एज ए होल इंटीग्रेशन. जब इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे वहाँ में भी एक डी एक्स लगाना पड़ेगा. उस दिस डी एक्स इज़ फॉर दैट इंटीग्रल एंड दिस डी एक्स इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रिजल्ट, उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन. ओके, बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फंक्शन आएगी उस फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फिर करेंगे. ठीक है. सो हाउ विल रीड दिस पर्टिकुलर रिजल्ट? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एज ए होल अगेन इंटीग्रेशन. ओके, सो इफ यू रीड लाइक दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. For solving such type of particular using this particular formula, उसको जब यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है हाउ टू चूज़ द फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन आप कैसे चूज़ करेंगे? अगर फर्स्ट फंक्शन आपने चूज़ कर लिया है तो आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगी. बिकॉज बिटवीन ए एंड बी देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा उसके लिए एक रूल है. तो ये रूल का नाम है I am late. You can say I late. Better you write I late. Now I am going to explain this particular. Here I means inverse trigonometric function.
inverse trigonometric function. What are the functions like sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, etc. ठीक है. What is L? L means logarithmic function. Logarithmic function like log x, log x square plus 1, so on. This type of function. Okay. A means what? Algebraic. Algebraic function like x square, constant. Suppose 1, 2, 3 all are algebraic. Constant function are also called algebraic function. Like 1 can be written as what? X to the power 0, so it is an algebraic function. Okay. So these are the algebraic function. T means trigonometric. So you are very well known with trigonometric function, sin x, cos x, sin twice x, cos twice x, like that, 10x. And finally, E means exponential. Please note down this, all the point. Exponential function are what? Like e to the power x, e to the power twice x, like that. This type, e to the power x square, these are also exponential function. ठीक है. So trigonometric function are sin x, cos x, sin 2x, and so on, 10x, like that. Clear? Sec x, all are trigonometric functions. So isolate. So here in this particular word, I is in the first letter, L is second, A third, T is what? Fourth, and E is what? Last one, right? So we will use this particular pattern to choose our first function. Okay. Suppose that in any particular expression, इसमें अगर suppose u and b में अगर आपका inverse trigonometric function present है, तो आपका पहला attempt by isolate rule के हिसाब से first function u can be taken as I, inverse trigonometric function. Whatever उसके साथ कोई भी function हो, आपका पहला चूज क्या होगा? I होगा. Suppose that आपके पास क्या है? u and b में logarithmic function भी है. एक चीज़ याद रखना होगा, logarithmic function is present together with inverse trigonometric function. दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? Because you do not get the formula of integration of log x or integration of sin inverse x or cos inverse x. ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को मिला है. There is no such standard integral. So if you log x and inverse trigonometric function दोनों अगर एक साथ हो जाए, if both are together, then both cannot be together. I want to say log x and sin inverse x both cannot be together because we cannot use this. कोई एक को suppose दोनों present है, तो हम क्या लेंगे? sin inverse x को लेंगे. We will take sin inverse x as what? First function, right? And log x, integration log x, तो integration log x क्या हम लोगों को पता नहीं होगा, तो हम कैसे solve करेंगे? ये इंटीग्रल नहीं कर सकते. We cannot move ahead. So u and b में एक साथ log and sin x, sin inverse नहीं आ सकता. तब आ सकता है if any one of them should have integral. उसका standard integral पता होना होगा. ठीक है. तो इसीलिए क्या होता है? sin inverse, tan inverse, cos inverse, inverse trigonometric present होगा, उसके साथ log present नहीं होगा. अलग कुछ होगा, जैसे algebraic होगा, trigonometry हो सकता है, exponential भी हो सकता है. ओके नहीं? तो इसीलिए so in such cases if inverse trigonometric function is present, so u can be taken as first I without any hesitation. If logarithmic is present, then u can be taken as what? Logarithmic function. Okay. अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं हुआ, इस तीनों में सपोज a इज प्रेजेंट, तीनों में कोई भी हो सकता है. तो एल्जेब्रिक प्रेजेंट होगा तो u कैन बी टेकन एज व्हाट? एल्जेब्रिक. अगर ये तीनों नहीं है, उन दोनों में सपोज t and e is there, so in such cases what happen? u can be taken as what? t. Understood? So according to the situation you have to choose your first function. So उसमें फंक्शन क्या दिया है उस हिसाब से हम चूज़ करेंगे. हम लोगों को अभी पता चल गया I मीन्स इनवर्स, लोगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो उस हिसाब से कर लेंगे. ठीक है. एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए तो आपके लिए
आसान होगा समझ में, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, you will get more clarity on such type of for using this particular formula. Again I revise the formula: integration u into b, integration first function into integration of second function minus the dx of first function into integration of second function as a whole integration. Okay, now let us take one question. Suppose we are going to solve integration, suppose that x into tan इनवर्स x dx, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें दो फंक्शन दिया है, दिस इज एल्जेब्रिक एंड दिस इज व्हाट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो a एंड i में कौन सा पोजीशन, किसका पोजीशन सबसे आगे है, i का पोजीशन आगे है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन ये होगा और सेकेंड फंक्शन ये होगा आइलेट के हिसाब से, आइलेट, ठीक है। आइलेट के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ए के आगे, दिस इज आई इज बिफोर व्हाट ए, सो यू हैव टू चूज आई एज फर्स्ट फंक्शन। सो हियर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज व्हाट, tan इनवर्स एक्स, सो योर फर्स्ट फंक्शन विल बी tan इनवर्स एक्स, दैट मीन इट इज यू, ठीक है। तो यूज दिस फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे, फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है x इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो जो लिखा है फिर इसको रिपीट करो x डी एक्स, इसके बाद एक ब्रैकेट दिया करो और उसको फुल इंटीग्रेशन करो, ठीक है। हो गया, फॉर्मूला लिख लिया, अभी परफॉर्म करें। इंटीग्रेशन x डी एक्स मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन तो है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, यू नो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन x डी एक्स मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो अभी थोड़ा सा सिंपल हो गया, इस पार्ट तो ख़त्म, ये पार्ट तो हो गया, सिर्फ उसको इंटीग्रल करना है, ठीक है, उसको इंटीग्रल करना है। सो इसको कैसे करें, सो यू सी इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ को बाहर ले आए, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ सी द पावर ऑफ एक्स इज व्हाट, हियर 2 एंड पावर ऑफ एक्स इज हियर 2, सो सेम पावर। अगर इसमें एक्स होता तो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ट्वाइस जेड ले ले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, ट्वाइस एक्स आएगा, तो उसमें हो जाता प्रॉब्लम। सिंस एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट, सो दिस इज डिफिकल्ट। सो इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाट विल डू, विल यूज द टेक्निक, यू कैन यूज द डिवाइड रूल, उसके साथ इसके डिवाइड कर सकते हो, या थोड़ा सा टेक्निक, दूसरा टेक्निक यूज़ करो, वट एवर भी द टर्म इन द डेनोमिनेटर उसको ऊपर लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ज़्यादा कितना लिख लिया, 1 लिख लिया, तो माइनस करो, तो बैलेंस हो गया कि नहीं। देन व्हाट हैपन, यू कैन राइट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, हाँ, तो हाफ इंटू, तो ये इंटीग्रल क्या होगा, उसको क्या अगर डिवाइड सेपरेट कर सकते हो, दिस इंटीग्रल कैन बी सेपरेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, 1 होगा ही नहीं, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी ये आसान इंटीग्रल हो गया है, इट्स वेरी सिंपल इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स मीन्स व्हाट, पहले डायरेक्ट करें, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स मीन्स व्हाट, एक्स, और इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस स्क्वायर डी एक्स मीन्स व्हाट, tan इनवर्स एक्स। I think you know this formula, plus C, this is the final answer, ठीक है। So this way, if there are two functions are there, they are in product, how to use this Eilert method to solve such type of integral, okay. So if you know Eilert group by
then integration by parts is very easy. Choosing the first function is very, very important. Another interesting question I am going to solve. Suppose that you are going to find the integral of sine inverse x. We know that there is no such standard integral for sine inverse x. There is no formula. We know integration sine x, integration cos x, integration tan x. Okay, but there is no formula for integration sine inverse x, integration tan inverse x, integration cos inverse x. There is no such formula. So along sine inverse x, a function is what? A constant function is multiplied. 1 is multiplied, and 1 can be written as what? X to the power 0. So it is an algebraic function. Okay, it is an algebraic function. This is your inverse trigonometry function, and this is your algebra. This is algebraic, this is I. So according to Euler rule, what is the first function? Sine inverse x. So आप क्या करेंगे? Sine inverse x into integration of what? That is what? First function. This is your first function, okay? And this is your what? Second function. First function into integration of second function. Second function क्या है? 1. Second function 1 into dx means what? Dx. First function into integration of second function. Second means b is equal to what? 1. 1 into dx minus ddx of first function into integration of second function. जो इधर लिखते हो उसको फिर रिपीट कर दो. As a whole, what? Integration. Clear? Now sine inverse x. Integration dx क्या है? x है. Don't multiply this. Integration ddx of sine inverse x क्या है? 1 by root over 1 minus x square. And integration dx means what? X into dx. Okay. Now which can be written as x into sine inverse x minus x by root over 1 minus x square dx. Now you see 1 minus x square, उसका अगर डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा? x मिल जाएगी. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? ट्वाइस x. तो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो. एंड इफ यू सब्सटीट्यूट होल फंक्शन इनसाइड द स्क्वायर रूट, देन यू कैन सब्सटीट्यूट बाय z स्क्वायर. ओके, सो यू राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? साइड में लिखो z स्क्वायर. तो इसमें माइनस 2x dx, 1 का डेरिवेटिव 0 है, इज इक्वल टू 2z dz. ओके, so which can be written as what? Minus x dx equal to z dz. Okay, understood? So which can be written as x sin inverse x. ये माइनस अंदर ले जाए तो क्या होगा? माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अभी माइनस एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट? जेड डी जेड. ओके, एंड रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन क्या किया मैंने? जेड स्क्वायर किया है, तो रूट ओवर जेड स्क्वायर क्या होगा? जेड होगा. सो फाइनली योर इंटीग्रल बिकम्स x into sine inverse x plus what? Minus x dx is what? Z dz. And this root over z square means what? Z. तो दोनों कैंसिल होगा. x sin inverse x plus integration dz means what? Z plus c. Now you replace z. What is your z? Z is equal to what? Root over 1 minus x square. So final answer is what? X sin inverse x plus root over 1 minus x square plus c. ठीक है, this is your final answer. So I hope you understand. And very very important in this particular topic, integration by method of parts, you have to understand the rule ILATE. This is very important, ILATE. Okay, so and what are the abbreviation of every particular letter? So accordingly you have to choose your first function. This is the first one, so whatever be the function with him, I should be taken as what? First function. Then if I is not present, then L can be taken as function. If both are not present, then algebraic can be taken as first function. If these three are not present, then trigonometry is taken as a first function, or finally that is exponential function. Okay, so if you know this, it will be easy.
And whatever we are doing, everything we have done already, substitution method. Here I am applying substitution method. So you know what is substitution method, and applying some formulas. You know all the formulas. So here just one formula I have introduced, the integration u into b dx. The formula is u is first function and b is second function. Then what is the formula? First function into integration of second function minus ddx of first function into integration of second function, and as a whole integration. That's very simple. So when you solve few questions, then formula will not be a factor for you. It will be automatically come in your mind. Okay. So I hope you understand. And my advice is to that, solve few 2-3 questions at your own level, such that you can develop the concept better. Okay. So thank you very much. Thank you.